Welcome to Target IS. I am Om Prakash Rajput, and today we will see about electric flux. So, as you know that for a charge, if I consider a charge, it will have some feed lines. It will have some feed lines. If this is a positive charge, these field lines will be radially outwards. These field lines will be radially outward of this positive charge. So, what is the electric flux is? So, electric flux is basically, if I define it, it is the total number of electric field lines, or you can say these lines also as flux lines. Flux basically means something which is flowing. So electric field lines or the flux line, it is the total number of electric field lines or the flux lines. So whatever the number of electric field lines is coming out from this charge will give you the electric flux. So, and if you see, it is denoted as psi. Generally we denote it as psi, that's why I've given this. You can denote by anything like phi something. Okay, as this is the total number of electric field lines from a charge, it is generally or we can say that the electric flux in numerical quantity is equal to charge equal to charge. If we want to tell what is the electric flux due to this charge, it is basically the amount of charge only. It is basically the amount of charge only. So that's why the unit of electric flux is also coulomb. Unit of electric flux is coulomb only, because it is nothing but the field lines or the flux lines which are coming out of the charge. Or if it is a negative charge, that is the field line coming inside of this charge. We can say about these, we can say these lines are flux lines also. So this is about the electric flux. That what is electric flux? It is the total number of field lines through a charge. Now we can see the properties of these flux lines also. They are like this, that they will be starts from positive charge and terminate at terminate at negative charge. That is, if I say here is my plus q and suppose here is my negative charge, so the flux line will start from the positive charge and they will terminate on the negative charge. They will start from the positive charge and they will terminate on this negative charge. But what if there is only positive charge present in the area which we are considering? अगर सिर्फ वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये फ्लक्स लाइन दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा. दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव and they will terminate from infinity. Like if we consider this charge also, so some field lines here will terminate at infinity also. Now if there is only negative charge, now if there is only negative charge in our consideration, if there is only negative charge in our consideration, so what happens is they will start from infinity and will terminate at this negative
charge. They will start from infinity and terminate at negative charge. In electric field, you have learned that the electric field line starts from positive and ends at a negative. If there is no negative charge, they will end at infinity, and if there is no positive charge, so they will start from infinity. So this is same, because flux line is nothing but the electric field lines only. The second property is they will be parallel to each other. Parallel to each other, which means they will never intersect or cross each other. They will never intersect each other or cross each other, you can say. Also, there is one more property, that these flux lines are always normal to the normal to the surface. Normal to the surface. These flux lines are always normal to the surface. So this charge, the field lines are always from this surface, they are making 90 degree. Here also they are making 90 degree. If they are going in this direction, here also they will make 90 degree to the surface. So they are always normal to the surface. These field lines, these field or the flux lines are independent independent of medium in which चार्ज इज प्लेस्ड. अगर किसी मीडियम में चार्ज प्लेस कर रखा है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेंगी जैसे नॉर्मल फ्री स्पेस में बन रही है. दीज फील्ड लाइंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड. Understand? So these are some properties of electric flux lines. Now this electric flux has another name also. Electric flux is also called as displacement flux. This is also called as displacement flux. इसको displacement flux भी कहते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज अ स्केलर फील्ड बेसिकली. ठीक है, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज अ स्केलर फील्ड. सो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डी से डिनोट किया जाता है, और वेक्टर के लिए डी वेक्टर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो वी विल डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इसका एक और नाम भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी भी इसका नाम है. ठीक है, इट हैज अनदर नेम. इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है. What is this electric flux density? As you see, this is a electric flux density. So electric flux density is total electric flux per unit area. Total electric flux per unit area is known as electric flux density. This is the definition. Basically, we can define the electric flux density as it is the total, or we can say net flux also.
it is the net flux passing normally through a unit surface area. This is basically I'm telling about the magnitude only. The d vector magnitude, that is the electric flux density magnitude, is total electric flux per unit area. If we consider two charges, suppose if we consider two charges, here are my two charges. This is my plus charge, this is my negative charge. So how the flux lines will uh, go from here? They will start from here and they will terminate here. They will start from positive and terminate at negative. You know that. So this is how the flux line will move from positive towards negative. इस तरीके से यहाँ पर भी होंगी. अब यहाँ पर अगर मैं एक यूनिट सरफेस एरिया प्लेस कर दूं, यहाँ पर एक मैं यूनिट सरफेस एरिया प्लेस कर दूं, सो जितनी फ्लक्स लाइंस इस यूनिट सरफेस एरिया से पास हो रही होंगी थ्रू दिस यूनिट सरफेस एरिया, the number of electric field lines or flux lines which are passing from it will give the electric flux density. I have already written that it is total electric flux per unit area. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको सिर्फ यही दो लाइंस कंसीडर करनी पड़ेंगी, जो जैसे यहाँ पर ये दो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, तो वही कंसीडर होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से पास हो रही, बाकी नहीं. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि जो ये पूरी लाइन से, नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यहाँ से ये मतलब है कि जो लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से. ठीक है, डेफिनेशन में भी ये लिखा है, इट इज द नेट फ्लक्स पासिंग, it is the net flux normally, basically it is, अच्छा लिखा है यहाँ पे, net flux passing normally through a unit surface area. So passing, ठीक है, जितना उससे पास कर रहा होगा सरफेस एरिया से, वो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी. सो ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली. अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव डायरेक्शन आल्सो. So its direction is given by the unit vector which is perpendicular to the surface area. The unit vector which is perpendicular to the surface area. Whatever you are taking the surface, through that surface the perpendicular unit vector will give the direction of the this electric flux density. So we can write it in the form of vector also. What it will be? Total electric flux passing through this surface divided by the surface area and the this vector which is normal to the surface area. Here a n cap is what? Unit vector normal to surface area we have considered. Okay, so now let us see electric flux density due to a point charge. Electric flux density due to a point charge. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसी होगी? So for a point charge, let us consider a point charge this. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं अभी यहाँ पर हम. ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी. सो if I am considering a surface for this charge, so let us consider a surface which is spherical. ठीक है, ये मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ बट इट इज
इन द 3 डायमेंशन इट इज अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस एरिया पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पता करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी समथिंग रेडियली outwards like this to this surface. So what you have to find is electric flux density due to a point charge. So क्योंकि ये surface sphere है, so let us consider a small differential surface here. Let us consider a small differential surface here. So instead of considering a differential surface, we can do it directly, because it is a sphere and we know the area for this sphere also. So if I consider this, if I take the radius of this sphere as r, so what is the electric flux density magnitude? It will be total electric total electric flux divided by total area which I am considering. So टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अब इस बार क्या है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस इस सरफेस से पास होने वाली है, क्योंकि ये चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू जाने वाली है। तो हम ये बोल सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be equal to this charge only. Suppose this charge is q, so ये जो चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो q के बराबर ही होगा, because all the electric field lines will be passing through this surface. ठीक है, ये सरफेस एक स्फेयर है ऑफ रेडियस r, और इसका एरिया कितना होगा भाई? क्योंकि तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द चार्ज, दैट इज q, and the total area will be 4 pi r square. And what will be the unit vector? So it, as it is a sphere, the unit vector will be in the direction of, if I take this in spherical coordinates, so in the direction of r, so I can write this as ar cap. So due to a point charge, the electric flux density or the displacement flux density will be q by 4 pi r square, q by 4 pi r square. And one thing also here you can see is, you know that for a point charge the electric field intensity was given by 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by r square ar cap, if you remember it, that due to a point charge at a certain point the electric field is given by 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ar cap. So in this formula of electric field intensity and in this formula of electric flux density, what you can find the relation between the electric flux density and electric field intensity. If you see the formula both, here it is q by 4 pi r square, here it is q by 4 pi epsilon naught r square, direction is ar cap, and here also direction is ar cap. So if you compare these two equations, what you get is d will come as epsilon naught e. Now as I am considering this in this is all in free space, so I am taking epsilon naught. If this is if the charge is present in some medium of permittivity epsilon r, relative permittivity epsilon r, then it will be epsilon naught epsilon r e, or we can write as epsilon e. So you can see the relation between the electric flux density and electric field intensity. This is electric
flux density, and this is electric field intensity. ठीक है। अब ये तो इसका रिलेशन हो गया। अब एक और चीज यहाँ पर हम डी की यूनिट देखना, हाँ, देखनी थी हमको। So D, what was D? It was electric flux per unit area. So electric flux की यूनिट क्या थी? कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या थी? कूलम। एंड सरफेस एरिया की यूनिट क्या थी? सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सो द डी वेक्टर or the electric flux density unit will be coulomb per meter square. Units are important, that's why I've told that the electric flux density unit will be coulomb per meter square. And we have seen the relation between the electric flux density and electric field intensity. It is D is equals to epsilon E. D is equals to epsilon E. So इस रिलेशन से हमको एक और चीज और चीजें क्या पता लगती हैं कि that the electric flux density and the electric field intensity, they are in same direction. They are in same direction. And you can see that electric field is a function of permittivity of the medium, but the electric flux density is not, so it is independent basically, we can say. And this relationship will be useful when we are dealing with dielectrics also, because in dielectrics the permittivity will be changing, and we can use this relation D is equals to epsilon E for solving the problems for electric field and electric flux density. And the E, we have found out E for various charge distribution, that will be applicable for D also, that will be applicable for D also, as we have found out here for a point charge. For a point charge we have found out this relation, and we can relate this relation of the electric field, and we have found out that D is equals to epsilon E. For a line charge or a surface charge or a volume charge, we can also relate the electric field intensity and D. So we can write the equations directly for electric flux density from the equations of electric field intensity for line charge, volume charge and surface charge. Now let us find out electric flux density due to line charge. So for a line charge, the electric flux density definition remains the same. It is total flux divided by area which I am considering, and the total flux will be the charge in charge. So I can write this as Q divided by area. And for a line charge, the charge will be given as rho L dl. So I can write this in place of this. So what D will become here? It will be rho L dl divided by area. Now if this is a whatever the line charge it is, so we can take the area such that the total charge will be present in it, and you can find the electric flux to the line charge. Now we have related electric field and displacement flux density, and we know that electric field due to a infinite line charge is given by rho L by 2 pi epsilon naught. Here I am considering epsilon naught because I am considering free space. You can write epsilon if there is medium, different mediums in free space. So rho L by 2 pi epsilon naught rho arrow cap. We have found this already in when we have seen the electric flux field and intensity due to line charge. So as we have related D and E, I can write D
I can write D for infinite line charge. What it will become? This epsilon naught goes to the left side, and epsilon naught E is nothing but D. So what is remaining now? Rho L by 2 pi rho. This will be the equation for electric flux density. This will be the equation for electric flux density for line charge, infinite line charge. Similarly, we can relate electric field intensity. We can find out electric flux density for a surface charge. For a surface charge, what is electric field intensity? It is rho s by 2 epsilon naught. I am considering infinite surface. Rho s by 2 epsilon naught, and the unit vector is perpendicular to the whatever the surface I am taking, perpendicular to that. So epsilon naught goes to the left hand side, and it makes epsilon naught E is equals to rho s by 2 an cap. So epsilon naught E is nothing but D. So this becomes rho s by 2 an cap. Rho s by 2 an cap. So for a surface charge which is infinite, for infinite sheet of charge or infinite surface charge, this will be the electric flux density. This will be the electric flux density, rho s by 2 an cap. Now we'll see for a volume charge. For a volume charge. So for a volume charge, let's consider a charge is distributed over this surface uniformly, having volume charge density rho v. So what is the charge, total charge in this? It will be rho v and volume integral it is. So you can write triple integral also, or as dv only. I'm writing here dv only, so it means that it is triple integral only. So q is equals to rho v dv. And what is electric flux density? It is total flux, total flux divided by area which I am considering. So suppose if I want to consider the total charge, then I have to consider the area such that it encloses the surface. So now what it will become? Total flux upon this area. So I'm considering the area as sphere, so it will be 4 pi r square, and total flux is nothing but charge, so it is rho v dv by 4 pi r square. And what will be the direction of the flux? It will be ar cap. I mean electric flux density की direction क्या होगी? Perpendicular to the surface which I am taking. So as it is a sphere, I can take this in spherical coordinates and write ar cap. So this will be the electric flux density due to a surface charge. You can simply replace the flux by the charge which I am charge in the area which I am considering. Now we'll see Gauss law. So Gauss law, what is Gauss law? It states that it has a statement. So it states that total electric flux, total electric flux crossing a closed surface, crossing a closed surface will be crossing a closed surface will be equal to the charge enclosed by the closed surface, equal to the charge enclosed by the closed surface. So Gauss law states that the total electric flux crossing a closed surface will be equal to the charge enclosed by the closed surface. So what it means is
if I'm considering a surface like this and I want to calculate the electric flux passing through this surface. So it is basically three-dimensional surface. Suppose because थ्री डायमेंशनल सरफेस ही क्लोज होगा तभी तो एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा वो. सपोज माय सरफेस इज लाइक अ sphere. If I'm considering a sphere, so it is a sphere here. So what it says is the total electric flux through this closed surface will be equal to the charge enclosed in it. So suppose इसके अंदर चार्जेस हैं, ये 1 कूलम का चार्ज, ये -2 कूलम का चार्ज, ये +5 कूलम का चार्ज, ये -3 कूलम का चार्ज. ठीक है, ऐसे करके ये चार्जेस इसमें प्रेजेंट है इस सरफेस, इस क्लोज सरफेस में. तो इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो क्या होगा, इसके जो टोटल चार्ज इसने इनक्लोज कर रखा है उसके बराबर होगा. अगर बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, कुछ भी चार्ज प्रेजेंट हो, बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इट सेज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. सो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो टोटल चार्ज है इसके पास, तो 1 कूलम का चार्ज है, फिर -3 कूलम का चार्ज है, फिर -2 कूलम का है और 5 कूलम का है. तो 5 2 और 3 तो ये कैंसिल हो गए, बच गया क्या, सिर्फ 1 कूलम. तो जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 कूलम होगा. दिस गॉस लॉ वी हैव in the meanwhile we have studied this also, actually without stating the actual statement we have studied this. What we have studied is the electric flux is, what we have studied about electric flux, electric flux is the flux lines which are passing through the which are passing through any surface, flux line which are passing through any surface. So अगर कोई चार्ज, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया है तो सारी की सारी जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इसके थ्रू पास हो जाएंगी भाई, इसके थ्रू पास हो जाएंगी. तो वो सारी फ्लक्स लाइंस क्या बनाएंगी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द चार्ज फ्रॉम विच इट फ्रॉम दे आर एमर्जिंग और दे आर कन्वर्जिंग इन इट, उसी के बराबर होती हैं. जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, टोटल चार्ज के बराबर जिससे वो निकल रही हैं या जिसमें वो जा रही हैं. ठीक है, तो अगर हमने चार्ज को ही किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया, यानी कि एक वॉल्यूम के अंदर डाल दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एनक्लोज्ड सरफेस, दैट क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, उस चार्ज के बराबर हो जाएगा. तो ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं इन द मीन while studying. But here now this is Gauss law with statement. So Gauss law says that, it says that the total electric flux crossing a closed surface will be equal to the charge enclosed by the closed surface. So in the previous things also like this, in this what I have considered, this is my charge surface having charge density rho v, and this is enclosed in this imaginary surface which I have considered, जिसका एरिया मैंने लिया यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर वो गॉस थ्योरम ही तो एक तरीके से यूज करी है हमने, गॉस लॉ ही तो यूज करी है. ठीक है, इसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली गॉस थ्योरम थोड़ी सी अलग है तो इसको गॉस लॉ ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए. ठीक है, तो गॉस लॉ, तो ये गॉस लॉ ही तो यूज करी है यहाँ पर हमने. ठीक है, ये भी क्या है, अगर इससे मेरे को टोटल मतलब फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, जो इसने चार्ज इनक्लोज कर रखा है, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी एंड पर यूनिट एरिया. सो दिस इज द गॉस लॉ. ठीक है, और जो ये गॉस लॉ है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, सरफेस अगर क्लोज नहीं है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो जितने भी सरफेस हमने यहाँ पर ऊपर लिए, जैसे ये एक स्फेयर लिया जो कि एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है,
और हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी क्या कंसिडर किया था, एक स्फीयर ही कंसिडर किया था, ठीक है, जो कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये जो गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए। So we can write this in mathematical form also, that total electric flux will be equal to the charge enclosed. Total electric flux will be equal to the charge enclosed by the area, ठीक है। तो चार्ज enclosed by the area के बराबर हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ठीक है, सपोज करो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें एक सरफेस कंसिडर करना होगा। जैसे हमें एक सरफेस कंसिडर करना होगा, जैसे ये मेरा चार्ज प्लेस्ड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जो सरफेस कंसिडर कर सकते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जिस सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि क्लोज सरफेस होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में हम एक क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सिलिंड्रिकल सिस्टम होगा उसमें हम करना चाहते हैं तो गॉसियन सरफेस को हम एक सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ स्फेरिकल सिस्टम वी कैन कंसिडर द गॉसियन सरफेस एज स्फीयर, वी कैन कंसिडर द गॉसियन सरफेस एज स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके थ्रू हम पता करना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे पास हो रहा है, एंड दैट विल बी गिवन बाय द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, by that closed surface. In fact, now we can write the this which we have written the Gauss law as the electric flux is equals to charge enclosed in form of electric flux density also. So we have written D is equals to electric flux per unit area. So we can write the electric flux as D dot ds, and for a closed surface we can write this as to indicate the closed surface, it will be equal to charge enclosed. Here, as this is a vector quantity, this is differential surface vector. This is the mathematical form of Gauss law, we can say. So psi is closed integral of surface, ठीक है, surface integral है ये closed surface का, d dot ds equals to the charge enclosed by that surface. And we know यहाँ पर ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी आती है, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, ठीक है, हमने एक डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या पढ़ी थी कि किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, किसी भी वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल a डॉट ds will be equals to its divergence with the vector, यानी कि del dot a dv, del dot a dv, क्योंकि क्लोज सरफेस कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस एक वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करेगा। तो a डॉट ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ del dot a, this was divergence theorem we have learned in the introduction section, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखें तो d डॉट ds, ठीक है, d डॉट ds हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको मैं अगर पूरे फ्रेम में लाऊं तो ये था डी डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं। सो डी डॉट डी एस बोथ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, एंड इसको अगर वॉल्यूम में चेंज करना है यानी कि एक वॉल्यूम चार्ज होगा,
तो हम लिख सकते हैं रो वी डीवी, रो वी डीवी। ठीक है, इस चार्ज इनक्लोज को हम रो वी डीवी लिख सकते हैं। और डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी, डेल डॉट डी over the volume integral dv, and this will be equals to q enclosed or rho v dv, you can say if this is volume charge। so यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी, तो ये हो गया गॉस मतलब कि डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, सो वी कैन इक्वेट दीज टू आल्सो। सो वी कैन से दैट डेल डॉट डी will be equals to the volume charge density, del dot d is equals to volume charge density। so the volume charge density is basically the divergence of the electric flux density, volume charge density is the divergence of electric flux density। this is also the Maxwell's first equation, this is also the Maxwell's first equation, ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन भी है। ठीक है, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। ठीक है, उसकी मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस हैं, तो ये वन ऑफ द 4 इक्वेशंस है। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, गॉस लॉ ही है ये। ठीक है, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोल सकते हो, गॉस लॉ भी बोल सकते हो, गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक है, ये गॉस लॉ ही है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज कहाँ से ड्राइव हुई है, यहीं से ड्राइव हुई है गॉस लॉ से, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली, the total electric flux enclosed inside a closed surface will be equal to the charge enclosed। ठीक है, अब चार्ज enclosed अगर वो एक वॉल्यूम की फॉर्म में है तो उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी लिख सकते हैं, और डाइवर्जेंस थ्योरम से डी डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। डेल डॉट डी इज इक्वल्स डेल डॉट डी dv will be integration of rho v dv, and as both are here in the volume integration, so we can equate these two, del dot d equals to rho v। so this is Maxwell's first equation and this is Gauss law differential form also we can say। ठीक है, ये differential form है, differential differential form of Gauss law, क्योंकि डेल ऑपरेटर जो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, और ये जो हमने लिखी है ऊपर भी ऐसे लिखी हुई है वो इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, जो ऊपर हमने लिखी है ये, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। so this is about the Gauss law and electric flux। so that's all for today, we will see, we'll meet in next lecture, thank you।